पानी दे बरा। अरे हो वो पानी देगा। Hi all, good evening. Good evening, ma'am. Okay, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, so we will continue in yesterday's file itself.
We will quickly revise what all we discussed in yesterday's class and then we will talk about the remaining things. Okay. Now, do you know what exactly is MongoDB? क्या है MongoDB? Non-relational database. Unstructured data in the form of JSON file or dictionary. So, MongoDB is your non-relational database which is used to store unstructured data in the form of JSON files or dictionaries. So, this is the simple definition you can have, simple introduction you can have for this MongoDB database. Okay. Now, so what all things we did yesterday, as we had to communicate with your MongoDB server, MongoDB database using Python functions. First thing we did is we created this connection with your MongoDB database using Mongo client function of this PyMongo library. Okay. Then we saw how to create a database. How will you create a database? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या सिंटैक्स हमने यूज किया? सबसे पहले we saw this create connection, then we saw how to create a database. And how did we exactly created a database? Your server name and the connection name and the database name here. Then we saw how to create a collection here. And what is the syntax we have for creating a collection? database name and Square brackets, collection name. Okay. So here the equivalent thing of your MySQL table is called as collection here. And the difference we have between table and collection is table is your structured entity, whereas collections are unstructured entities. Whenever we will define, we will create a collection here in MongoDB, we will just give it a name. We won't be defining its structure prior to storing our data. And that is why we can store any type of dictionaries in a collection here. And then we saw how to insert data into these collections. So which all options we have for inserting data into this collection? Insert one, insert many. So there are two functions. One is your insert one function and other is your insert many function. What is the use of this insert one function? It will be used to insert a single document. So a row of your MySQL table is referred as a document here, and this insert one function helps us insert a single document to your MongoDB collection, whereas this insert many will be used to insert multiple documents. And what is the syntax of using this insert one function? That is your collection name dot insert one, and then we gave a dictionary here. Similarly, the syntax for your insert many function is collection name dot insert many, and here you will have your multiple dictionaries and you need to give them as a list. Okay. So that's how your insert many works. ये हो गया collection में data को insert कैसे करना है. One more thing we discussed here in case of MongoDB is all these three things, that is database, collection and documents are
interdependent. All of them, the creation of these entities is dependent on each other, and that dependency says unless and until you add a document to your collection, collection does not get created, and unless and until your collection is not created, your database will not be created. तो जब तक आप कलेक्शन में कोई डेटा इंसर्ट नहीं करते, आपकी कलेक्शन क्रिएट नहीं होती है, और जब तक कलेक्शन क्रिएट नहीं होती है, योर डेटाबेस इज आल्सो नॉट गेट क्रिएटेड. ठीक है, एंड दिस इज योर इंसर्ट वन एंड इंसर्ट मिनी फंक्शन. So both of these will help you insert a new document to your collection, either single document or multiple documents. Next हमने देखा how to read the data. read data from this MongoDB collection. And the functions we have for reading data is one is your find one function and second is your find function. Okay. Find one क्या करता है? This find one will help you. So this returns a single document. It always returns a single document, whereas this find function returns a list of documents, or we can say multiple documents. So in this Okay. Syntax. find one function, what is the syntax to use this find one function? Again, your collection name dot find one. First dictionary will have your filter condition if we have to add any, and second will be your select part. So we saw how to add different filter conditions using different operators here. And then we also saw how can we define our select. तो select यहाँ पे लिखने के लिए और to choose which all keys we want to see in the output, we have two options. Either we can specify कौन से keys आपको चाहिए output में, या फिर आप specify कर सकते हो कौन से keys नहीं चाहिए. So inclusion projection and exclusion projection. So when you say some keys is equals to 1 colon 1, that means we want to include those keys in our output. And when you say any key colon 0, that means we want to exclude those keys from the output. So this will be the case for the keys which we are adding to the document. But this object ID, these auto generated values, those will be there in the output by default. और अगर वो नहीं चाहिए तो उसके लिए explicitly colon 0 लिखना पड़ेगा. So in case of find one and find functions, we discussed two scenarios. Find one के case में what happens when we do not give any filter condition, which record we will be able to read? First record. First document of the collection. Whereas if you are giving any filter criteria, any filter condition, which record this one returns Match First document. match. Whichever matches the first first. matched document. Okay. So this is our collection, and if I say find underscore one without any filter condition, I'll be able to read this first document here. Now, if you will add some filter condition, let's say gender is equals to male, which document we will be able to get in the output? This 104. Okay. So let's add that filter criteria here and say gender is equals to, है कोलन देना पड़ेगा ना. हाँ एक second. So this will return you. Okay, first document maybe gender value is M, and that is why we are getting this particular record in the output. Student name से आएगा. हाँ.
ओके, सो द थिंग हियर इज बेसिकली फाइंड वन के साथ अगर आप कोई फिल्टर कंडीशन देते हो तो यू विल गेट द फर्स्ट मैच्ड डॉक्यूमेंट. ओके, नाउ व्हाट इफ you have to update this particular document 104 wala. Okay, so there is one way we can put a filter on this roll number value या फिर student name में भी आप filter लगा सकते हो. Another possible way to access a document is with the help of these object IDs. So these object IDs will be unique to all the documents. तो उसके बेसिस पे भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. And for that, what you have to do is you have to import this library called bsin. इसमें से हमें यूज करना है object id. So bsin dot so you have to import these things and then say your collection name dot find one. And here now we are going to give a filter on object id. So id colon this object id. Here in this bracket, you have to give this number. If you go and we had to fetch this particular document, तो ये वाला जो number है, that object ID you have to specify here. So you will be able to access this particular document. So any object ID, किसी भी document को object ID के basis पे अगर fetch करना है, read करना है, update करना है, so your filter condition will look something like this. Working the file wrong. ओके उसके लिए हमें ये वाला लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू कैन पुट अ फिल्टर ऑन दीज ऑब्जेक्ट आईडी वैल्यूज. ओके, नाउ दिस वाज योर फाइंड वन with and without filter criteria. Next function we saw is this find function, which will again help you read the data from MongoDB collection, जिसका syntax है आपका collection name dot find, and here you will have your filter condition again, and your second part, second dictionary will have the select part. In this case also we will have two scenarios, with and without filter criteria. Without filter condition, what will be the output of this find function? This will help you All documents. this returns all documents of the collection. Okay, whereas when we give a filter condition with your find function, it will return all matched documents. जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपकी फिल्टर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे रीड कर पाएंगे. Then we also saw how to update data from MongoDB collection, and the functions we saw for this is update one and your update mini. Again, this update one helps you update a single document, whereas this update mini function helps you update multiple documents. So with the help of this update one and update mini, you can either update a value of an existing key, किसी existing key का value हम update कर सकते हैं, या फिर we can also add a new key to these documents. So if I have to add gender values for 106 and 107, 106 और 107 के लिए जेंडर वैल्यू अगर हमें ऐड करनी है तो व्हाट
syntax we have to write, what function we have to write. Collection name dot update many. What will be your filter criteria? That can be on this roll number values. The roll number greater than 105. So this is your filter condition, and what we have to update here is Set. gender value को set करना है as female. So what will have here set gender is equals to female. Okay. So this will help you update both of these documents. So if you see, right now we do not have gender field itself in these two documents. But जैसे ही we execute this cell, your data, your documents will be refreshed to have gender value as F. तो basically यहाँ पे हमने क्या किया है? We have updated these two documents to have a new key in them. Okay. So this update one, when it is used without filter criteria, it will help you update the first document of the collection. So here also we will have two scenarios. One will be your without filter condition and other will be with filter condition. So अगर without filter इसे use करेंगे तो क्या होगा? We will be able to update the first document of the collection. Whereas if you have a filter criteria with this update one function, we will be able to update first matched document. Okay. Now let's say I have to update this location value as well as contact for the first record. फर्स्ट डॉक्यूमेंट का लोकेशन और कॉन्टैक्ट दोनों ही हमें अपडेट करना है. सो व्हाट वी विल हैव टू राइट इज योर कलेक्शन नेम डॉट अपडेट वन. Because we are trying to update the first document, we won't be giving any filter criteria. And here, what we want to set is, Contact. first thing, we want to set the location value to anything, let's say Hyderabad, and we also want to set a contact field to some number. सिंपल. एसक्यूएल में जैसे हमने कॉमा देके मल्टीपल कॉलम्स का वैल्यू अपडेट किया था, वैसे ही यहाँ पे भी you can just add multiple keys and their new values using a comma over here. So if you go and check now, first document का location as well as contact is updated. Okay. So that's how your update one behaves with and without filter criteria. विदाउट फिल्टर कंडीशन देंगे तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपडेट कर पाएंगे. अगर फिल्टर कंडीशन देते हैं तो ऐसा डॉक्यूमेंट अपडेट कर पाएंगे जो आपके फिल्टर कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ऐसा पहला डॉक्यूमेंट. ओके. सो नाउ लेट्स से इफ आई हैव टू ऐड लोकेशन फील्ड इन दिस 103, थर्ड वाले डॉक्यूमेंट में लोकेशन का फील्ड ऐड करना है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक यूज ऑफ दिस अपडेट वन फंक्शन एंड से collection name dot update one, filter criteria will be roll number 103, and what we have to set is location as Pune. So this will go and help you update or add a new key to this particular document. Now if I'll say update one where gender value is male, which document we will be able to update?
कौन सी डॉक्यूमेंट अपडेट कर पाओगे फिर से? फर्स्ट डॉक्यूमेंट। 104. फर्स्ट। हाँ, ऐसा पहला डॉक्यूमेंट जो आपके फिल्टर को सेटिस्फाई करता हो। ओके, नाउ let's see how this update many behaves. Again, in this case also you will have, okay, let's just write a syntax over here. So your collection name dot update one. Here you will have your filter condition, and in second dictionary you have to use this set operator the key value. key Key value. and its new value. So if you have to update multiple keys, just keep adding those keys using a comma here. Okay, so this will be the syntax of using this update to one function on your collection. Same way, you have this update many, your syntax will remain same. That is collection name dot update many filter condition set new value to a column. Okay. In this case also you will have two scenarios. This function maybe you will have two scenarios, one without filter condition and other with filter condition. And what will happen if you are not using any filter criteria to your update many function? It will help you update all documents of the collection. And if you are adding a filter, it will help you update all matched documents. Okay. So now let's say I have to update location values for all the students to Chennai. सारे स्टूडेंट्स का लोकेशन वैल्यू मुझे चेन्नई अपडेट करना है. So which function we will have to use here? Update many function. So update many, क्योंकि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं विदाउट फिल्टर क्राइटेरिया. And what value we want to set is field location, and the value is Chennai. So if you go and check the results here, सारे स्टूडेंट्स का location value is now updated to Chennai. Now, if I have to add a new key to all these documents, सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ब्रांच का वैल्यू एज कंप्यूटर मुझे यहाँ पे ऐड करना है. So what we have to do is you can simply use this update mini function again and say branch is equals to computer. So the same function, same syntax will help us add a new key to all the existing document with a value. Okay, so this update functions, one or many, that's just two. The difference is which document we are actually accessing and we are trying to update. दोनों फंक्शन में डिफरेंस ये है कि आप कौन सी डॉक्यूमेंट और कितने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर रहे हो. But everything else, yeah, the syntax remains same, and both of these functions will help you either update the value of an existing key or to add a new key to any of the documents we have. Okay, so that's your update functionality. Everyone clear on this? Yes, ma'am. Okay, so if you have to drop a key from an existing document, किसी डॉक्यूमेंट का एग्जिस्टिंग की को आपको ड्रॉप करना है. ओके, सो लेट्स से we want to drop this contact field itself. Okay, so your syntax would be, what you have to do is your collection name update many, no filter criteria because we want to delete it from all the documents, and then you have to say unset. This is the keyword to drop a key from a document here, and here you have to give your key name. So let's see, contact we have to drop, and
say colon 1. So this will help you drop a key from the documents. So the keyword used here is unset. किसी कॉलम को किसी की को अगर डॉक्यूमेंट से ड्रॉप करना है तो यू हैव टू यूज दिस अनसेट कीवर्ड. ओके. नाउ दैट इज योर मैम अगर अपडेट. हाँ. मैम अगर उस कॉलम की वैल्यूज डिलीट करनी है तो जैसे अभी हमने सेट की थी कंप्यूटर ब्रांच पे. नो, क्योंकि अगर सी दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस राइट, तो यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं रखनी है तो यू स्ट्रेट अवे डिलीट दैट कॉलम, डिलीट दैट की इटसेल्फ. देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग लाइक कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू नल राइट, जबकि आप सीधे सीधे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वाला डिक्शनरीज यहाँ पे रख सकते हो. Okay, now this is about your update operation, the third crude operation we had to see. Last crude operation we have to see is how to delete data from the collections. Data को delete कैसे करें. इसके लिए again we have two functions. One is your delete one function and second is your delete mini function. Again, this delete one function will help you delete a single document, whereas delete many will help you delete multiple documents. So let's see both of them one by one. So the first function you have to see is delete one function. So the syntax to use this delete one will be again similar, that is collection name dot delete one. Here a filter condition if you have to give any. And then in this case also, you will have two scenarios, one without filter criteria and the other with filter criteria. What will happen if you use this delete one without filter condition? Can you tell me क्या होगा? फर्स्ट 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 डॉक्यूमेंट डिलीट First document delete होगा. जिस डॉक्यूमेंट को आप फाइंड वन से रीड कर रहे थे, अपडेट वन से अपडेट कर रहे थे, उसी डॉक्यूमेंट को आप डिलीट वन की हेल्प से डिलीट कर पाओगे. एंड what if we are using this delete one with the filter condition? It will help you delete first match फर्स्ट मैच. document. Okay? So if you want to delete first document of the collection, you can straight away use this delete one without filter criteria. If you'll execute this, see the results over here. 101 will be gone, which was the first document of this collection. Now, if you say delete one where gender is equals to email, sorry, not email, mail, कौन सी document delete होगी? थर्ड Third document 104. So collection name dot delete one, and your filter condition says gender is equals to male. So 104 will be deleted from the collection. So again, it depends on your data, it depends on your requirement कि आप कौन सी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हो, बट दीज आर दी फंक्शनैलिटीज, दीज आर दी यूसेज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट फंक्शंस वी हैव हियर. इन फंक्शन की हेल्प से कौन सी डॉक्यूमेंट एक्सेस होगी वो समझ में आया, तो यू विल बी एबल टू पुट अ प्रॉपर फिल्टर कंडीशन टू आइदर रीड, update or delete those specific documents. Okay, so this is how your delete one behaves. And then we have this delete many function. और ये क्या करता है? The syntax of using delete many will remain same, that is collection name dot delete many.
and a filter condition if we have to give. Here in this case also you will have two scenarios. एक होगा आपका विदाउट फिल्टर एंड दूसरा होगा आपका विद फिल्टर कंडीशन. Now what will happen if you are using this delete many without filter condition? How many records, how many documents will be deleted? all. सारे हो गए. All the documents. Yes, it will delete all documents of the collection, whereas if you add a filter condition to it, it will help you delete all matched documents. So if you say now collection name dot delete many, and we are giving a filter condition as let's say roll number less than 105. How to give that filter criteria is किस कॉलम पे आपको फिल्टर लगाना है, that is roll number. What filter you have to put? It should be less than 105. Okay, so this will help you delete these two documents because both of them are less than 105. And now if you go and use this delete many function without any filter condition, all the documents, all the remaining documents from this collection will be deleted. सारे documents जो है यहाँ से delete हो जाएंगे. So if you go now and check the data here, we do not have any data, any documents to this student collection. But if you see, यहाँ पे हमने जैसे डेटा को डिलीट किया, सारा डेटा हमने डिलीट किया, फिर भी हमारी कलेक्शन डिलीट नहीं हुई है. तो जब आप ऐड कर रहे हो, जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी कलेक्शन तब तक क्रिएट नहीं होती जब तक आप उसमें कोई डेटा ऐड नहीं करते. बट while deleting, even if you delete all the data from it, your collection will still remain there in the database. Okay. Now, if I have to drop that collection itself, collection को ही drop करना है, so the function I have to use is drop. So your syntax will be collection name dot drop function. So here in our case, COLL dot drop, if you say and reload the data over here, student collection is now deleted. And if you observe, जैसे ही आपकी स्टूडेंट कलेक्शन डिलीट की हमने, आपकी डेटाबेस, कॉलेज डेटाबेस भी यहाँ से डिलीट हो गई है. सो वाइल डिलीटिंग, डेटा को डिलीट करते हो तो कलेक्शन डिलीट नहीं होगी, बट जैसे ही यू डिलीट द वन एंड ओनली कलेक्शन ऑफ दैट डेटाबेस, योर डेटाबेस ऑल्सो गेट्स deleted. So I'll just give you the syntax how to drop database here. Database को अगर drop करना है, तो you have to use your connection name and say drop database and the database name. So whatever database you have to drop, that name you need to give over here. And this function, this drop database function will help you drop a database from MongoDB server. So this was all about the basic CRUD operations we had to see in case of MongoDB. I'll just add this delete one. जैसे कलेक्शन अगर ड्रॉप हो गया तो किसी तो उसको क्या वापस रोल बैक कर सकते. Sorry, connection. कलेक्शन जो है हमारा ड्रॉप हो गया तो उसको वापस भी किया जा सकता है. No. Okay. So we had this function which will help you delete single document. The syntax will be collection name dot delete one. And here you will have your filter condition. And in this case, you will have two scenarios. Delete one के भी दो scenarios होंगे, these two.
And then when we saw this delete mini function, which will help you delete multiple documents. Your syntax remains same, that is collection name dot delete mini and the filter condition if you have to give. And in this case also you will have two scenarios, with and without filter criteria. Okay, so this is the summary of MongoDB session we have seen. So these are the crude operations we have performed on MongoDB database. Okay, now let's quickly understand how to import a so okay, we saw how to get your MongoDB collections data into a data frame. Now let's quickly understand how to import a CSV file into Mongo collection. CSV फाइल को कलेक्शन में कैसे सेव करना है, सो जैसे हमने सीखा हाउ टू इंपोर्ट अ CSV फाइल इनटू अ डेटाबेस टेबल, वैसे ही वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू गेट योर CSV फाइल्स डेटा इनटू अ MongoDB कलेक्शन नाउ. तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू रीड दैट CSV फाइल with the help of this read CSV function and just give the file name. So if you assign this to an variable called df, print करेंगे तो whatever the data we had in this employee.csv is now here in a data frame. Now can we save this data frame directly into a MongoDB collection? Directly इसे collection में save कर पाएंगे क्या हम? You have to convert into dictionary. Yes, we have to convert this data into dictionary format with the help of this toDict function. And the parameter you need to pass to this toDict function is orient. And the value should be records. So now if you will print this data, assign this to a variable called data and print it, whatever was our CSV file is now here in the form of dictionary, and then we can store this dictionary into a MongoDB collection. अभी क्योंकि हमने जो डेटाबेस क्रिएट करी थी वो डिलीट कर दी है हमने, we will see how we will again create a new database. कैसे करोगे? Use a connection variable and give a name. So any name you can give, let's say ML, save its value into a variable called db. And now what I want to do is इस डेटाबेस में हमें एक नई कलेक्शन बनानी है, मे बी एम्प्लॉय, एंड ये जो डेटा हमारे पास है we want to insert that data into that collection created. Okay, so the syntax, another possible syntax we can use for this is, one way we can create this collection using this and then use a function to insert data into it, या फिर सीधे सीधे database dot collection name dot insert mini. So this will help you create this employee collection inside this database called ML we created here. And as we want to insert all these dictionaries, which function we will have to use is this insert mini function, and just pass this data variable to it. So if you'll execute this, go to your compass, reload the data, we can see ML नाम की database यहाँ पे create हो गई है, and if you expand it, you will be able to see this employee collection here. Okay. सेम वे जैसे आपने अभी CSV फाइल को इंपोर्ट किया, वैसे ही we can import a JSON file into MongoDB collection. JSON फाइल को भी आप MongoDB collection में इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड उसके लिए what you have to do is, first of all we need to import this library called JSON क्योंकि इसके functions हमें यूज करने हैं, and then you have to open a JSON file you have with you.
कोई भी जेसन फाइल आपके पास है उसे हमें ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ओपन फंक्शन. सो iris.json I have with me. Pass this, let's pass this to an variable called f. So here we are just opening that file. अभी हमें क्या करना है? We have to load that file into a variable with the help of this load function defined inside JSON library. Okay, so JSON.load this f, this file we will be loading in this variable called data. Now if you go and print this data, so we have iris data set. So you all must be aware of this data set already. आप लोगों ने use किया होगा. वही डेटा सेट है. द ओनली थिंग इज इट्स हियर इन द फॉर्म ऑफ जेसन फाइल. तो अभी हमें क्या करना है? इस डेटा को MongoDB कलेक्शन में सेव करना है. बट I do not want to create a new database now. I just want to use an existing database I created above. तो इस डेटाबेस में अगर एक नई कलेक्शन बनानी है and in that collection I want to insert this data. Our syntax would be database name db dot iris is the collection name, and again we have to use this insert many function and pass this data variable to it. If you do so, refresh the data here. एक और collection हमने create कर दी है in this ML database with iris name, with the iris data we have. Okay, so that's how you can read your CSV file and get its data into a MongoDB collection, and this will help you read a JSON file and get its data into a MongoDB collection. Clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So this was all we wanted to discuss about MongoDB. Again, शायद मैंने पहले भी बोला है, as far as we have the experience, अभी तक MongoDB पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है किसी को इंटरव्यू में. So you will definitely have questions on SQL. SQL पे definitely question रहेगा. बाद में आप यूज मैम करो ना एसक्यूएल करो. में एसक्यूएल में मैम किस पे ज्यादा फोकस रहता है इंटरव्यू पे? तो कौन से पार्ट पे ज्यादा वेटेज रहता है? ओके, सो बेसिकली जितना भी हमने लिया है, दैट्स ऑल, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. वो बहुत क्या बोलते हैं, एसक्यूएल इज लाइक यू विल हैव मेनी मोर कॉन्सेप्ट्स इन एसक्यूएल, बट जितना हमने कवर किया है ऑल ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट as far as your work is considered and as far as your interviews are considered. तो अगर इनिशियल राउंड्स में आपको एसक्यूएल के क्वेश्चंस आते हैं तो you will have to write basic queries which will include where clause, group by, aggregate functions, the part which we saw till group by initial rounds के SQL में. But अगर you have an SQL interview round, final round, so you will have an assignment which will have 5 to 6 questions, जिसमें you may have to use the knowledge of joins, subqueries and the window functions. Okay. तो ये सब कुछ जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कवर किया है क्लास में. तो आई वुड सजेस्ट कि जो क्लास में हमने लिया है उसे पहले कवर करिए, एंड देन प्रोबेबली इफ यू हैव टाइम एंड यू वांट टू एक्सप्लोर इट मोर तो यू कैन डू दैट. बट जितना हमने क्लास में लिया है उतना पहले पढ़िए. दैट इज ऑल इम्पॉर्टंट फॉर युअर इंटरव्यूज. मॅडम एसक्यूएल असाइनमेंट आहे का कधी? असाइनमेंट आहेत माझ्याकडे, मी शेअर करते आजच्या क्लास नंतर. आणि मी साइट शेअर केलेली का प्रॉब्लेम सॉल्विंग साठी, एसक्यूएल क्वेश्चन साठी? No, No, ma'am. नो मॅम. नाही तर एक साइट है लीड कोड बोल के, आपको वहां पे बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, सो एसक्यूएल क्वेश्चंस का असाइनमेंट प्रिपेयर करना इज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू हैव क्वेश्चन, required output, data sets. So I have the assignments in which you will have few basic queries
You may have to write few basic queries, and then I'll share a link where you will find multiple scenario based questions. तो वो साइट पे मीडियम जिनका क्या बोलते हैं मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर इंटरव्यूज और फॉर योर वर्क एज अ डेटा साइंटिस्ट. ठीक है. And I'll also share the notes I have. I'm not sure if I have shared it earlier, but yeah. मैम इंडस्ट्री में एक्चुअली एसक्यूएल यूज ज्यादा होता है या मोंगोडीबी ज्यादा यूज होता है? SQL. ओके. अभी तक रिलेशनल डेटाबेसेस ही यूज होते हैं. तो हो सकता है कि आप कोई और रिलेशनल डेटाबेस पे काम करो, जैसे ओरेकल हो गया, टेराडाटा हो गया, DB2, बट यू विल डेफिनेटली वर्क ऑन SQL मोर देन मोंगोडीबी. मैम वो रेगेक्स भी आपने बोला था कि थोड़ा इंट्रो दे देती. हाँ हाँ चलेगा. चलेगा. एक सेकेंड, आई फॉरगॉट. लेट्स जस्ट ओपन वर्कबेंच. Okay, so let's go back to the employee table we have. So there is this regexp function we have in SQL, जिसके साथ you can use multiple wildcards. जैसे we have seen this like operator, right? तो like operator के साथ हम क्या कर सकते हैं? We can just use which all wildcards we can use with like. First is your underscore. Underscore, which will check for a single character, whereas you have this percentage, which will check for 0 or multiple characters. There are multiple factors. Okay, but only these two wildcards you can use with this like operator. But with this regexp function, which all, so we have multiple wildcards we can use. So this is dot, which will check for a single character. Plus will check for one or more characters. Okay, then you can use this star to represent, or it will check for 0 or more characters. Dollar will be used to specify end of string. This cap is start of the string. So I think this is almost similar in Python also. Correct? Yes, मैम, लेकिन इसको यूज कैसे करना है इसको? करेंगे. Okay, we will see. I'll just give you all the wildcards we can use. Okay, question mark for 0 or 1 instance. Okay, तो ये सारे wildcards आप use कर सकते हो. Then this represents List of okay, and then you can also have this, which will say not in the list, not in the given list. This represents n instances, and m comma n, this represents m2 n instances. Okay, so ये सारी चीजें हैं when you are using your regexp function. Okay, now if you have to fetch a name which is starting with S, let's say, if you have to fetch a name जो S से start होता है, what query we can write is select star from your table name where employee name regexp. Start होने के लिए what is the wildcard you have? S. So this will help you fetch all the names जो S से start होते हैं.
सो सिंपल, जैसे हमने लाइक यूज किया था ना, सेम वे आपको बस regexp यूज करना है, बट you can use all of these options with your regexp function. So if you have to fetch a name, if this is your table, और अगर आपको ऐसे नेम्स फेच करने हैं जो ए से एंड होते हैं, तो आपका क्या पैटर्न होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम regexp, what will be your pattern? A डॉलर डॉलर dollar. Okay, now what if I have to fetch a name जो R से start होता है, and then after R I want to have any character between A and I. Okay, so your name should start with R. So where employee name I regexp, name आपका start होना चाहिए R से, and then you want to have any character between A and I. So your pattern will be like this. Okay. Ma'am, in हाँ, that end, Yeah, we yeah. have to give 3%. sorry. After square bracket, have to give percent. तो प्रीत कैसे आ जाएगा मैम यहाँ पर नेम? स्टार्ट आर से होने चाहिए ना, तो वो प्रीत इब्राहिम विक्रम धीरज के। You have to give, we forgot to give that cap. Okay. So this way only you can use this regexp function. So if I have to give a pattern for PAN card number, PAN card का pattern क्या होगा? We do not have that data, but we will just try to write a pattern for PAN card. PAN card का syntax क्या होता है? So you will have 5 characters. Then 4 numbers, 4 numbers, 1 character. 1 character. ठीक है, तो उसके लिए पैटर्न क्या लिखेंगे हम? So we want to have 5 characters which can be either of A to Z. So occurrences will be 5. Then we want to have 0 to 9. 0 to 9, occurrence 4. 4. Again A to Z, occurrences. ऐसे you can write any pattern or expression with this regexp function to get the relevant data. Okay. मीन्स मैम जो पाइथन के लिए रेगेक्स यूज होता है वही यहाँ पे भी है क्या सर? हाँ हाँ, सेम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। और जैसे हमने लाइक का कंडीशन लिखा, वैसे ही आपको regexp बस यूज करना है यहाँ पे। ओके मैम। ओके, व्हाट एल्स? मैम, MongoDB से डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? MongoDB से डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? हाँ? यही पूछ रहे हो ना आप? यस मैम। हमने वो कल डिस्कस किया, राइट? ओके, लेट मी गो देयर। ओके, सो कलेक्शन में आपके अगर डेटा सेव्ड है, so let's quickly create this database once again. ओके, तो ये रिकॉर्ड्स तो हमने इंसर्ट कर लिए। अभी इफ यू हैव टू गेट दैट डेटा इनटू अ डेटा फ्रेम, तो हमने क्या किया? वी ट्राइड टू read that data first with the help of your find or find one function,
और जो भी आपको आउटपुट मिला, व्हाट वी डिड, वी पास दैट आउटपुट टू दिस डेटा फ्रेम फंक्शन, सेम वे. ओके, Got it. समझ में आया ना? दिस इज प्रीटी इजी. रीड करो, just assign this to an variable and pass that variable to a Data data frame frame. function. That's it. Then we get into CSV file. Yes, to CSV. So data can be, transferred from anywhere to anywhere. You have lots of functions, but our requirement till now to know about databases, why did we actually learnt about databases, is because we wanted to understand how to get your database data into a data frame to use it for your model building. ओके, तो आप कोई रिलेशनल डेटाबेस पे भी काम करो, जो कुछ भी, कोई भी हो सकता है. इट कैन आइदर बी ओरेकल, टेराडाटा, DB2, SQL सर्वर, एनी रिलेशनल डेटाबेस. सो इफ यू सी एनी ओपनिंग्स wherein you will be seeing Oracle और कोई और रिलेशनल डेटाबेस का भी अगर आपको नाम दिखता है, तो you should say yes, because if you know about SQL, you will be able to work on any of these databases. कोई भी रिलेशनल डेटाबेस पे आप काम कर पाओगे. And as well as you can add this MongoDB to your resume saying I know basics of non-relational database also. क्योंकि डेली लाइफ में जो है you may use MongoDB. मैम ये कमांड सेम ही है क्या इसके, ओरेकल और बाकी जो एप्लीकेशन आपने बोले? हाँ हाँ, आपके कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में कॉन्सेप्ट्स सेम रहेंगे, कमांड्स भी सेम रहेंगे, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना सेम है. थोड़े बहुत सिंटैक्स डिफरेंसेस है रिलेशनल डेटाबेसेस में, जैसे हमने यूनिट पे डिस्कस, राइट, कि MySQL में डेटा टाइप्स अलग होते हैं तो भी हमें एरर नहीं आता. बट यू विल गेट एन एरर इफ योर डेटा टाइप्स आर डिफरेंट. जो क्वेरीज को आप यूनियन कर रहे हो, उन कॉलम्स के डेटा टाइप्स अलग हैं, तो यू विल गेट एन एरर इन टेराडाटा. बट MySQL में ऐसा नहीं है. सो लिटिल डिफरेंसेस विल बी देयर बिटवीन दीज डेटाबेसेस, बट द कॉन्सेप्ट्स or the programming language or the syntaxes will remain same, almost same, I would say. थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा syntax का, but you can get syntaxes anytime from Google. But अगर आपको concept पता है, तो you will be able to work on any of these relational databases. और अगर इंटरव्यू में पूछते हैं तो nobody will ask you कि MySQL का syntax लिखो या फिर Oracle का syntax लिखो. They will just ask you to write SQL query. तो वो कोई भी रिलेशनल डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होने वाली हो सकती है. Okay, so if you go through this W3 school site, you will see the same query written for 2 or 3 different relational databases. तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कितना स्लाइट डिफरेंस है सिंटैक्स में. It won't be much. Okay. मैम MySQL में जैसे सॉर्ट बाय, ग्रुप बाय जैसे फंक्शन होते हैं, वैसे MongoDB में नहीं होते क्या? MongoDB में भी है. ओके, सॉर्ट करने के लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड सॉर्ट MongoDB में. ग्रुप बाय के लिए भी आप कर सकते हो. ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स जो हमने MySQL में सीखे, वो MongoDB में भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉइंस, क्योंकि ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, तो यू वोंट बी हैविंग जॉइंस हियर, बट एवरीथिंग एल्स कैन बी implemented in MongoDB also. वो जुपिटर नोटबुक में ही करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, जुपिटर पाइथन के ही फंक्शंस है, तो जुपिटर नोटबुक में ही आप कर सकते हो सब कुछ. ओके, बट आई वुड सजेस्ट जितना हमने सीखा है उतना पहले उसको पूरा पढ़िए अच्छे से. दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द इंटरव्यू, बट सॉल्व एज मेनी एज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इफ यू कैन. ओके, रिसेंटली किसी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, ही हैज दिस व्हाट वी कॉल इट एज मेटा डेटा, मतलब टेबल्स दिए थे, 4 टेबल्स थे. They just gave the structure of the tables and the relationships between tables.
and we had to join them, and there was some requirement कि data कुछ fetch करना था, but yeah, only that much they gave. There was no data, there was just the table structure and the relationships between tables. तो ऐसे भी क्वेश्चंस, ऐसे भी असाइनमेंट्स आपको मिल सकते हैं. इसीलिए आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, like the student I'm talking about, he has to solve that question, the same question using Python as well as using SQL. तो ऐसे भी केसेस होंगे कि आपको सेम क्वेश्चन पाइथन से भी सॉल्व करना पड़ेगा और एसक्यूएल से भी सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो प्रैक्टिस दीज थिंग्स. अगर कभी कभी कुछ डाउट्स आते हैं तो लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. I'll share the notes, I'll share the assignments as well as the link where you can find the practice questions. ठीक है, उस साइट का नाम बताए ना मैम. हाँ वही लिंक मैं शेयर करूंगी, लीड कोड करके साइट है. तो मैम ये जो लीड को नॉर्मली जो डेटा साइंटिस्ट का जो भी इंटरव्यू रहेगा मैम, उसमें एसक्यूएल का तो परसेंटेज काफी कम रहेगा ना, जैसे 100% में से कुछ 5% क्वेश्चन पूछ के. No, 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 no. That's what I'm saying. That's what I'm saying from the first day. कि SQL का परसेंटेज ऐसा कोई नहीं है, ठीक है. So it is as important as your Python and your machine learning, because बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं जहां पे स्टूडेंट्स को फाइनल राउंड जो है वो SQL पे होता है. सो इन दैट केस कैन यू से इट इज जस्ट 5%? अगर फाइनल राउंड आपका एसक्यूएल पे हो रहा है जहां पे आपके जॉइंस और विंडो फंक्शंस पे जो भी है 5 to 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट विद इन 1 or 2 days, is it just the 5% of the interview? No, right? Okay, so it depends on the requirement actually, नहीं but मतलब जो नोट्स है हमारे पास अभी आपने जो प्रोवाइड किए वो आपने लर्न किए, दैट विल बी इनफ ना? यस यस यस, जितना हमने कवर किया है उतना ही पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा. तो जो मतलब अभी ये थियोरेटिकल तो होगा, अभी जो कोडिंग कंसर्न जो है, अगर कोई इंटरव्यूअर वहां पे रियल टाइम सिनेरियो पूछते हैं तो वहां पे आपको लीड कोड से प्रैक्टिस करके जाना होगा. करेक्ट. ओके, सो और ऐसे ओके, सो इफ यू हैव एनी न्यू सिनेरियो, इंटरव्यू में अगर कोई डायरेक्ट कोई सिनेरियो पूछ लेता है ऑन द स्पॉट, तो जरूरी नहीं कि आप पूरा क्वेरी वहां पे लिख के बताओ, ठीक है. यू कैन जस्ट टेल हाउ यू कैन सॉल्व इट. जैसे हमने क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, राइट? तो अगर आप सिर्फ इतना भी बोलते हो कि वी कैन सॉल्व इट इन दिस वे, दैट वुड ऑल्सो वर्क, बिकॉज नोबडी विल एक्सपेक्ट कि एकदम से कोई क्वेश्चन आए हैं एंड यू विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग द क्वेरी फॉर इट. नो, बिकॉज इट टेक्स टाइम. तो इफ यू आर एबल टू जस्ट टेल देम कि उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट. बट मोस्ट ऑफ द केसेस डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए जब हमने अप्लाई किया है तो दे विल डेफिनेटली गिव यू एन असाइनमेंट, और आपको टाइम भी मिलेगा 1 और 2 दिन का टू सबमिट दैट असाइनमेंट. तो उस केस में आपको क्वेरीज लिखना पड़ेगा. यू हैव टू गेट द स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट ऑल्सो, लाइक एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट यू हैव टू सेंड इन दैट केस. इसीलिए आई एम सेइंग whatever we have discussed in the class, that was just the concepts. Those are the concepts of SQL. आपको वो concepts implement कैसे करने हैं उसके लिए scenario based questions solve करने पड़ेंगे. ओके मैम कल मॉक है क्या? हाँ, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. एक्चुअली सर ने बोला है कि कल आपकी मॉक्स नहीं होंगी. और AWS का वो टाइमिंग क्या है मंडे हुआ? 7 to 8:30 ना, जो भी उस दिन सर ने जो बोला था, द सेम थिंग. एंड आई ऑल्सो
have told him that nobody has any concerns because nobody told me on that day. ओके मैम. Okay. 7 to 8:30 होगा आपका AWS का सेशन. ओके मैम. Okay. Okay, then if you do 7 not to have 8:30 वो होगा AWS. 8:30 के बाद कुछ और होगा कि बस वन आवर सेशन? वो मुझे नहीं पता. शायद आपकी रेगुलर क्लास भी हो. आपका सिलेबस बचा है क्या अभी हाँ, भी? ML बचा. अच्छा, तो शायद हो सकता है कि आपकी रेगुलर क्लास भी हो. मैं सर से एक बार बात करूंगी या फिर सर वैसे इन्फॉर्म कर देंगे अकॉर्डिंगली. ठीक है. ओके मैम. ओके, देन एनीथिंग एल्स एनीवन? नो मैम. नो मैम. फिलहाल तो सॉरी. ओके, ठीक है. कोई क्वेश्चंस नहीं है तो लेट्स स्टॉप हियर. So this is the last session of databases. Practice the things which we have seen in the class. कहीं पे कुछ doubts होते हैं तो ping me, let me know. I'll try to help you out. Thank you everyone. Good night. थैंक यू मैम. very much, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.